31 years old now. My journey with मेरी Jesus Christ, it starts when I was 5. मेरी उम्र 31 साल है और मेरा सफ़र जो है मसीह के साथ 5 साल की उम्र में शुरू हुआ। यस प्लीज़ कंटिन्यू। Okay. So I was 5 years old. I'm the daughter of an Arab man and मैं एक अरबी northeast, yeah, northeast African mother. So I'm dual citizen of two different places. मैं अरब के 2 मुल्कों के साथ मेरा तल्लक है और मैं एक अरबी बाप के घर में पैदा हुई। Yeah, यस। and my father is Saudi Arabian, but I can't tell you where my mother is exactly from because I don't want people to know where I am. मेरा बाप जो है वो सऊदी अरब से हैं, हैं और सऊदी अरेबियन है, और मेरी माँ जो है वो सऊदी अरब की नहीं है, और इससे ज़्यादा मैं अपने अजदाद के बारे में नहीं बता सकती। Right. So, effectively, my parents met when they were, my mother was very young. She was 16. She married my father. She was, she didn't know what she was walking into. She was very young. She fell in love with my father. My father was an older man. He met her in Europe. They ended up marrying. He told her he told her that he was a Christian. At first, there was, that problem between them because, she knew him to be a Muslim. मेरा बाप और मेरी माँ की मुलाकात जो है यूरोप में हुई, और मेरी माँ की उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल थी, और मेरी माँ को मेरे बाप ने झूठ बोला और कहा कि मैं एक मसीही हूँ, और इस तरह उनकी शादी तक नौबत आ गई। यस सिस्टर। Right. So later on, after they're married, of course, there's no turning back. She realizes that he's still Muslim and she's still Christian, but they make an arrangement where they will raise us secular, meaning no religion. जब मेरी माँ को पता चला तो कि वो एक मसीही नहीं है बल्कि वो एक मुसलमान है और सऊदी अरब से है, तो फिर जब बच्चों तक नौबत आई तो उन्होंने एक आपस में एग्रीमेंट किया कि बच्चे जो हैं वो ना मुसलमान होंगे और ना ही मसीही होंगे, बल्कि उनको हम एक सेकुलर तरीके से उनकी हम परवरिश करेंगे। Right. So I think I was about 2-3 years old when the problem started. मेरी उम्र Islam is very, very ritualistic. So because she's Christian, obviously there's going to be tension between the families. मेरी उम्र बहुत छोटी थी, उस वक्त तकरीबन 3 साल की थी जब हमारे घर में मुश्किलात शुरू हो गई, क्योंकि मेरा बाप मुसलमान था, मेरी माँ जो है वो मसीही थी। तो इस तरह जो घर में जो परेशानियाँ और मुश्किलात और जो है वो शुरू हो गए। जी। Yeah, so the reason I say this is because she's living in Saudi Arabia. It's a Muslim majority nation. Okay, there are no other religions. In fact, every other religion is prohibited. So her being a Christian is the equivalent of her being an enemy of Allah in their middle, like in their midst. मेरी माँ क्योंकि सऊदी अरेबिया में रहती है, तो और उसको मसीही जो तरीक़ेकार है, रीति रिवाज, उसको वो उस पर अमल पैरा नहीं हो सकती, उसके लिए मुश्किलात हैं। और इसलिए कि इस्लाम के अंदर जहाँ पे मुसलमान की तादाद 100% मुसलमान हो सऊदी मुल्क में, वहाँ पे एक मसीही का रहना और अपने ईमान का को अमल पैरा होना, ये बहुत मुश्किल काम है। Yeah, so she had a lot of difficulties. Chief among them, because she is Christian, she was very, discriminated against. They were prejudiced against her. They hated her. She didn't have to engage with them. They made it very clear that they hated her. And she lived a very difficult life, even though we were privileged. We did have our own home.
but we were surrounded by our enemies. अगरचे मेरी माँ का अपना उधर घर था, एक अलहदा घर में रह रही थी, लेकिन इस माहौल में रहना जहाँ पे हर तरफ मुसलमान ही मुसलमान हों, और जहाँ पे 100% आबादी मुसलमानों की हो, वहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। और मेरी माँ को बहुत ज़्यादा जो नफ़रत अंगेज़ी का सामना करना पड़ा एक मसीही होने के नाते उस माहौल में। Yeah, so eventually something happened, okay? And my Muslim side of the family, I would say my grandmother, my grandfather was a nice man, but my grandmother not so nice. She did something very, very big, huge. I can't talk about it, but she did something that is unforgivable. And so then my mother decides, if they've decided to do this to my children, I am going to go and have them baptized. Meaning, she breaks the agreement she made with my father to raise us secular. मेरी दादी ने जो मेरी माँ के मेरे बाप की तरफ से जो मुस्लिम साइड जो मेरे ख़ानदान की है, और मेरा दादा तो ठीक था, लेकिन मेरी दादी जो है वो बहुत ज़्यादा मसीहों से नफ़रत करती थी, और इस लिहाज से कुछ उसने इतना ज़्यादा गड़बड़ की, इतना बुरा किया हमारे साथ, मेरी माँ के साथ, के जिसको मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकती। और जब मेरी माँ इस नहज तक पहुँचा दिया गया, तो मेरी माँ ने, अगरचे ये एग्रीमेंट ये था कि हम बच्चों को एक सेकुलर तरीके से परवरिश करेंगे, तो मेरी माँ ने उस वादे को भी ख़ातिर में नहीं रखा, और उसने अहद किया कि मैं अगर ये इस हद तक जा सकते हैं कि मेरे साथ इतना बुरा करें, तो मैं अपने बच्चों को मसीही रीति रिवाज के मुताबिक मसीह में बपतिस्मा दिलवाऊंगी। Right. So after my mother discovered what my grandmother did, she decided, I mean, she still loved my father, don't get me wrong, but it became very, very clear to her as she became an adult, because this is, understand, she married my father when she was 16. So nearly 4 years later, she's a 20-year-old. Now she's getting older. Her brain is recalibrating. Now she realizes, oh, I want my children to be Christian. I am going to baptize them. So she makes a plan to go back to her homeland for a vacation. She doesn't tell my father why, but she takes us with her, and she has us secretly baptized. जब मेरी माँ की शादी मेरे बाप से हुई, तो उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, और लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो उसको अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत गलत हो गया है, और वो मेरे बच्चों को उसने चाहा कि मैं अपने बच्चों को मसीही तालीम दूंगी और मसीही बनाऊंगी, और ये सोचकर उसने यूरोप में वापस जाना चाहा, ताकि वहाँ जाकर अपने बच्चों को और हमें एक मसीही तालीम के मुताबिक पानी का बपतिस्मा दिलवाए। Right. So the reason she did this is because she realized that Christianity for her was more than just a religion. It's faith, and she understood what she had put under jeopardy. She had jeopardized our eternal salvation. She didn't realize what she had done when she married my father, but she then decides, have them baptized. At least that way, I can undo some of the damage, and that's why she takes us back, has us baptized. I don't know if this would be a replay for you, but effectively she does this because she feels trapped, and she feels guilty, and she feels she has no other choice. Otherwise we'd be raised Muslim by force. जब मेरी माँ को थोड़ी समझ आई, तो उसने चाहा कि हम इनको, जो मैंने गलती की है एक मुसलमान से शादी करके, इतना बड़ी गलती ज़िंदगी में की है, उसका अजाला करने के लिए उसने सोचा कि शायद कुछ बेहतर हो सके, और उसने सोचा कि मैं अपने बच्चों को यूरोप में लेकर वापस जाऊंगी और वहाँ जाके इनको पानी का बपतिस्मा दिलवाऊंगी।
Right. So she has us baptized. I remember I was exactly 5 years old. It was an amazing ceremony. There were hundreds of people waiting for us. It was, huge. My community, my mother's community loves her. Her father was a priest in the church. So you can only imagine when we came and she wanted to have us baptized, everybody was celebrating, everybody. And these are maybe near 1,000 people came to watch us get baptized. और जब हम यूरोप में वापस गए तो मेरी माँ का बाप जो है वो एक पास्टर पादरी है। तो वहाँ पे जब पानी का बपतिस्मे की रस्म हुई तो वहाँ के तकरीबन 1000 लोग मौजूद थे और बड़ी ही शानदार जो बपतिस्मे की रस्म जो है वो अदा की गई। Right. So, as soon as I was baptized, I knew something was different. For me, the world was different. It looked different. The colors were different. The smells were different. The sounds were different. Everything I recognized about this earth was completely different. जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे इर्द गिर्द सारी दुनिया ही बदल गई है। मेरे इर्द गिर्द जो कुछ भी है, लोग फ़र्क हैं, लोगों के अंदर और फ़ज़ा फ़र्क है, हवाएं फ़र्क हैं और ये पूरी कायनात जो है मुझे मुख्तलिफ लगने लगी। Right. And the way it happened is that all of a sudden I could hear music. I could hear singing. I could hear sounds that I wasn't used to. It was everywhere. It was 24 hours a day, but this was beautiful music. This was beautiful, comforting music. And before long, the sun's colors were different. It was almost like I was, in heaven all the time. And this is, at the age of 5, going all the way to like 6, 7, nothing changed. For over, like, I would say the next 7 or 8 years, up until I could understand like my own thoughts and process things, the world was completely different. Like, I don't know how to tell you. I could see, yeah, okay, no, you go ahead, sorry. 5 साल की उम्र में जब मैंने बपतिस्मा लिया तो उससे अगले जो 3 साल हैं मैंने लगातार मुझे मेरे कानों में एक खूबसूरत मौसीकी जो थी और खूबसूरत साज़ों की आवाज़ जो मुझे सुनाती रही और अगले 3 साल जो कि तकरीबन 8 साल की उम्र तक मुझे ये मेरे कानों में खूबसूरत एक म्यूज़िक और मौसीकी की आवाज़ें आती रहीं और मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा था मेरे साथ, लेकिन ये सारी फीलिंग और सारा जो एहसास मुझे था वो बहुत ही खूबसूरत था जिसको मैं लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकती। Right. And so my mother, she takes us back to Saudi Arabia, my father's homeland, and I think nothing of it. I think everybody's experiencing this. I'm thinking there's nothing different. Maybe this is just a part of growing up. Maybe this is what my parents see. Maybe this is what they hear. I have no idea what I'm experiencing. Go ahead. जब फिर ये सब कुछ बपतिस्मा हो गया तो फिर मेरी माँ हम सबको वापस लेकर सऊदी अरेबिया में आई तो मेरा ख्याल था कि ये सब कुछ नॉर्मल है और मतलब कुछ भी ऐसा मुख्तलिफ नहीं होगा और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन जब हम सऊदी अरेबिया में आए तो उसके हालात बहुत मुख्तलिफ थे। Right. So, we're back in Saudi Arabia now, and all I know is I can see angels, I can see the demons at night. During the day, of course, it's the angels, and at night, it's the demons. जब मैं सऊदी अरेबिया में वापस आई तो मुझे फरिश्ते नज़र आना शुरू हो गए और मुझे जो बदरूहें हैं वो भी नज़र आना शुरू हो गई। दिन को मैं फरिश्तों को देखती थी, रात को मुझे जो बदरूहें हैं वो नज़र आती थी। Right. So, obviously, angels are beautiful. They're made of light. They're wonderful. They're comforting. Yes, they're so majestic and so spectacular to look at.
your heart will race, you will fear some kind of fear, but it's not the fear that makes you want to run away, you know? You genuinely see a holiness from them. But on the opposite side, I was seeing these demons. They were in attack mode. They were lining up, like you know how a military army is. Back in the day, they would line up, right? And they would be in rows, one after the other, and then you'd see hundreds of them. That's how I would see them, and they'd have these horrible red eyes, and they were insidious. You had to fear them. They were horrible. और जब मैंने फरिश्तों को देखा तो फरिश्ते मुझे बड़े ही खूबसूरत और बड़ा ही शानदार किस्म की उनकी लुक थी, लेकिन जब मैंने उसके मुखालिफ जब मैंने बदरूहों को देखती थी तो वो डरावनी होती थी हर वक्त मुझे, जैसे कि कोई आर्मी जो है किसी हमला करने के लिए तैयार हो, इस तरह की बदरूहें और बड़े ही खौफनाक किस्म की उनकी जो शक्लें थी और शबीह थी। Right. So up until that point, they were just watching me, in my bedroom. Wherever I was, I would see them. And then, of course, there's a different type of creature as well. They're like shadow people. They look like people, but they look like shadows. And they're very, very fast. You can't see them until they stop. And if you do see them, it's accidental. They don't want you seeing them. They don't like it when you see them. जब बदरूहों के साथ मेरा इनकाउंटर हुआ या मैंने बदरूहों को देखती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि वो मेरे यहाँ तक तो ये था कि वो मुझ पर हमला करने वाली हैं, और जैसे जैसे मैंने देखा कि उनकी वो मेरी ज़िंदगी को जैसे बर्बाद करना चाहती हैं, मुझ पर हमला करना चाहती हैं, और उनकी वो शैडो की तरह और जो साया होता है इस तरह मुझे नज़र आती थी, और बड़ी ही भयानक उनकी शक्ल और उनकी शबीह थी। Yeah. So these creatures are very small and you would only see them at night. Okay. I think it has something to do with light and darkness not mixing. Okay. So these dark creatures, you know them by their eyes. They've got either red eyes or they've got black, shiny marble eyes. You know that they're not good. You know that they're not good. You can feel their energy. बदरूहें जो होती थी या वो ज़्यादातर मुझे रात को नज़र आती हैं, कुछ उनको शायद लाइट के साथ या रोशनी के साथ उनका कोई प्रॉब्लम है, और दिन को मुश्किल है, लेकिन रात को जो है वो मुझे नज़र आती थी, और उनकी आंखें जो होती थी या तो बहुत लाल सुर्ख होती थी या फिर काली चमकने वाली आंखें उनकी होती थी। Yeah. So obviously I was scared out of my mind because these monsters were, I'm a child. What would I know? And all I know is that they're staring at me, they're glaring at me with hatred that I've never seen before. I've known hatred from human beings because I'm a Christian or the daughter of a Christian woman. But the type of hatred coming from these creatures is unmatched. It's a type of hatred that if they wanted to, they could unalive you just by their eyes alone. उनकी आंखों की तरफ देखने से मुझे पता चलता था कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हैं, और अगर उनका ये बदरूहों का बस चले तो वो मुझे उसी वक्त मार देंगी। Yeah, so as a child who was raised in Saudi Arabia in such circumstances, I didn't know how to talk, how to express myself. I was stifled. And anytime I felt fear, I would live in that fear. I would exist in that state of fear. I would have panic attacks, right? But I would function. I would be a functioning person with an ongoing panic condition. If that makes. मुझे ये सब कुछ इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे दफ़ा जिसको पैनिक इंग्लिश में पैनिक अटैक कहते हैं, वो इस तरह के मुझे होना शुरू हो जाते थे इन बदरूहों को देख के। इनकी आंखों की तरफ बहुत दहशत और उनमें खौफ जो था वो तारी करने वाली ये शक्लें थी जो मुझे नज़र आती थी,
और मुझे लगता था कि ये मुझे फाड़ खाएंगी, और इससे जो मुझे मेरे अंदर जो पैनिक अटैक हैं वो मुझे होना शुरू हो जाते Right. थे। So, the way I would describe it is like, you would not know that I'm having a panic attack. I'd still be functioning, right? Like I could go to school, I could, be playing, I could, be talking to my friends. You wouldn't know that I'm actually experiencing an extended period of panic. My heart is racing and I can't stop it. And this has been my condition throughout my life, all my life. And I could always hear my heart beating in my ears. I could always feel like something was strangling me, you know? Like I couldn't breathe. देखने में हाँ, देखने में सब कुछ मामूल के मुताबिक होता था। मैं स्कूल भी जाती आती तो बयान भी नहीं, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैं हर वक़्त डरी रहती थी और खौफ में मुब्तला रहती थी, और मेरा दिल इतनी तेज़-तेज़ धड़कता था कि मैं अपने दिल की धड़कन जो है वो खुद सुन सकती हूँ। Yeah, so I got used to their presence. I got used to the fear. When you stay in a panic mode, you don't come out of it. So I think I just lived with it. I existed with it. There's no solution. Even if I could tell somebody, what am I going to tell them? Who am I going to tell them is hurting me? Who am I going to tell them is frightening me to that level? Also, understand, I'm still a child. I have no way of describing what I'm seeing. इस बात को भी समझे कि मैं सिर्फ उस वक्त बच्ची थी, 8 साल की थी। मैं पूरी तरह सारी चीज़ों को बयान भी नहीं कर सकती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जिस खौफ और जिस दहशत में मैं मुब्तला थी, और इन इन बदरूहों को देख कर जिस डर और खौफ में मैं रहती थी, उसका मैं पूरी तरह किसी से बयान भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं अभी बहुत बच्ची थी उस वक्त। Yeah. So, while all of this is happening, remember, I'm still also experiencing a beautiful thing. I'm experiencing the different light. The light is changing around me, almost like it's hugging me. Every day I feel like the sun is my friend. Like the sun's light, it just brings joy. Every day I hear music, not music in my home, but every day I would hear, just I couldn't tell you, I couldn't describe what it was as a child, but now as a grown up, I know it was angels singing. This is during the day. मेरे साथ 2 तरह के तजर्बात हो रहे थे। एक तरफ तो मुझे जो है जैसे कोई फरिश्ते जो हैं वो उनकी आवाज़ें मुझे आती हैं, और मैं उनका खूबसूरत म्यूज़िक सुन सकती हूँ, और Thank you, हमद Subhan. के गीत। Love you, हुँ। sis. हाँ, उनकी खूबसूरत हम्द और तारीफ़, और वो मैं सुन सकती हूँ। और एक तरफ ऐसे मुझे लगता था कि जैसे कोई जो नूर है जो मेरे चौगिर्द चमका है, और जो मुझे अपनी आगोश में ले रहा है, और उसमें बड़ा सुकून और अमन और शांति है। और दूसरी तरफ एक उस तरह के तजर्बात हो रहे थे जिससे मेरे अंदर खौफ और दहशत की हर वक्त जो एक लहर जो है वो जारी रहती थी, जो कि बदरुओं की शक्ल में मुझे नज़र आती थी। Yeah, so basically, what happens after these, situations, and they're repetitive in nature, right? Every single day you're living out the same type of fear, the same type of every time it was getting darker, the fear would come back. And it got to the point where now it was taking up all my body was having a reaction. So I would have a physical reaction to the fear, to the state of fear that I was in, that even if I wasn't seeing these entities, my heart was still racing. I felt afraid at all times. मैं हर वक्त डर और खौफ में रहती। जैसे-जैसे शाम हुआ करती थी, तो वैसे-वैसे अगर चाहे किसी दिन मुझे वो बदरूहें नज़र नहीं भी आईं, तो मुझे एक डर और खौफ का जो एक के असर के ताबे मेरी ज़िंदगी जो थी वो अज़ाब बनती जा रही थी। जैसे-जैसे शाम होती थी, तो मुझे पता चलना शुरू हो जाता था कि अब मेरे लिए मुश्किल जो है वो शुरू हो गई है। Yeah. So
soon after, I mean, not very soon after, after a very long while, I guess, I have an experience. And this is one of the most amazing things that has happened to me. I come back, and at this point, I'm in the third grade. I'm 8 years old. And actually, no, I'm 7 years old because I jumped a grade. And I'm in my bedroom. It's daytime. I just came back from school. It's about 1 p.m. And my bedroom had these massive windows, and I love looking outside them. And the sun is behaving very, very different to how I'm used to it. I know that it's different for me on a day-to-day basis, but this day, the sun's light is acting like it's water. It's acting as if it's moving around me. It's moving around things. I don't know how to explain it to you other than it looks like water coming down, like rain. मैं फिर इन्हीं दिनों में जब मैं तकरीबन 7 या 8 साल की थी तो एक ही बहुत ही खूबसूरत तजर्बा भी मेरी ज़िंदगी में हुआ। मैं स्कूल से वापस आई तो दोपहर 1 बजे का टाइम था, तो जब मैं अपने कमरे में अपने बेड पे थी तो वो खिड़की में से सूरज की किरणें जो हैं मेरे कमरे में अंदर आ रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे सूरज की किरणें जो हैं वो पानी की तरह, मैं इसको पूरी तरह बयान नहीं कर सकती कि मेरी फीलिंग क्या थी, मैं क्या महसूस कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि सूरज की किरणें जो हैं पानी की तरह मेरे चौगिर्द जो हैं वो चमक रही हैं और मेरे इर्द गिर्द मुझे उन्होंने घेर लिया है। So on this afternoon, I decide I'm going to take a nap. Only I'm not sleepy. I took a shower, I cooled off. It's Saudi Arabia. It's very, very hot. And, this is the peak of summer. So it's the hottest it gets in the country. So I took a shower to cool off. I'm in my bedroom. I decided I'm going to take a nap. And I'm not sleeping. I'm not sleepy at all. Now I'm completely dazzled by this light that's behaving differently. And all of a sudden, I see that the sun's light becomes a river, like it's flowing from the sky, coming into my window. And now I see nothing but golden light coming into my room. I'm completely frozen. And the golden light is filling the bottom of my room. The floor looks like a pond, like a swimming pool full of sunlight that is sparkling. जब मैं उस दिन जब मेरी खिड़की में से सूरज की किरणें नज़र आ रही थी तो उस दिन मैंने सोचा कि मैं अगरचे मैं सोना नहीं चाहती थी लेकिन मैंने सोचा कि मैं सो जाती हूँ। तो मैंने शावर लिया और जबकि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मैंने नहाया और मैं अपने कमरे में आकर सूरज की किरणें मुझे ऐसे लगीं जैसे कि एक सोने की जो सोने का एक दरिया है जो मेरे कमरे की तरफ बह रहा है और मेरा कमरा जो था वो सोने की किरणों के का एक स्विमिंग पूल की तरह वो बन गया, जैसे जहाँ पानी की तरह सूरज की किरणें जो हैं सोने की रंगत की हो गई। और इस तरह की ये मेरी जो महसूस जो मैंने किया उसको मैं लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकती। So I'm in my bedroom, like I said, and now I have this pond of shining sunlight in my bedroom, and I want to touch it with my foot. I can't. I'm panicking. Like I don't know what to think. It's so beautiful, but it's abnormal. This is supernatural on a different scale. So I don't know what to do. I'm just sitting on my bed all hunched over and just afraid to look up and to look down. I don't know what's happening. And I blink, and out of this pool, not out of it. It's like there's this tiny little platform forms out of this pool. Tiny little thing, like a boulder. It looks like a pond, just a pond. Only it's made of sunlight. That makes sense?
जब मैंने मैं अपने बिस्तर पे बैठी हुई हूँ तो मैंने देखा कि समुंदर के सूरज की जो किरणें हैं वो मेरे कमरे में आकर उन्होंने जैसे कि एक हौज़ होता है, पानी का हौज़ होता है जो कि सूरज की सोने की किरणों के साथ भरा हुआ है, वो मैं अपने कमरे में देखती हूँ। वो मुझे वो एहसासात जो हैं उसको मैं पूरी तरह बयान नहीं कर सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। So I'm looking at everything with these huge eyes. You have to understand, I am shocked, beyond shocked. My jaw drops. I don't know what to think. And then before I know it, I blink, and on this boulder, on this like right in front of me, to my right, is this huge angel. Huge. We're talking about, I don't know, 10 meters tall. No, let me not exaggerate. Let's see. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, five. Okay, about 7 meters tall. Okay. And he is huge. He looks like a Roman centaur. Okay. A centurion. Okay. And he looks like this angel my grandmother has on her tapestries on the wall. I know this angel intimately. I've seen him in my grandmother's home because my grandfather is a priest as well, if you recall. I don't want to give you too many details just yet. जब वो मैंने अभी बहुत हैरान हो रही थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे कमरे में। सूरज की किरणें सोने की किरणों सोने के पानी की तरह मेरे कमरे में आकर उन्होंने मेरे कमरे को एक हौज़ की शक्ल दे दी है। तो अचानक मैं क्या देखती हूँ कि मेरे ये दाएँ तरफ एक बहुत बड़ा जो फ़रिश्ता है वो खड़ा हो गया आके, और वो ऐसे जिसका कद कोई तकरीबन कोई 7 मीटर के करीब था, और वो फ़रिश्ता ऐसे था जैसे रोमी सिपाही होते हैं या रोमी ऑफिसर होते थे, जब इस तरह का उसने लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। Yeah, like an ancient Roman centurion, with their body armor. Like, he looks like a Roman centurion. I don't know how to explain it to you. And I know immediately that this is Angel Michael, okay, Michael. And I'm staring at him, and he's just so beautiful. He is so astonishingly beautiful. And he's so gentle, so sweet, and yet so powerful. I know if he wanted to unalive me, he could at any second. I know that if this angel decided that he wanted to end me, he could end me. He's that powerful. And I'm just this tiny little child who's afraid to look up and afraid to move. If I move the wrong way, maybe he'll get angry. And then I'm thinking to myself, oh, maybe this is it. Maybe this is how I go. Maybe I'm supposed to go with him. Maybe I should die now. But I didn't say goodbye to my mother, to my father, to my brothers and sisters. This is all that's happening in my head. But at the same time, I can't take my eyes off him. वो जो फ़रिश्ता मुझे नज़र आया, मुझे पता चल रहा है अपने रूह में मैंने महसूस किया कि ये जिब्राईल फ़रिश्ता है, और ये वो It's Michael. It's मिकाएल, Michael. सॉरी माइकल, सॉरी Yes. माइकल, Michael. मिकाएल फ़रिश्ता है, और जो मुझे मेरे ऊपर मेरे ज़ाहिर हुआ है, जिसको मैंने देखा, और उसकी हशमत और उसकी जो कुदरत है वो बयान से इतनी बाहर है। ऐसे मुझे लगता था कि वो बहुत ताकतवर है और हर सब कुछ वो कर सकता है। अगर वो मुझे मारना चाहे तो उसके लिए 1 सेकंड का काम है। और मुझे ये भी पता चल रहा था कि वो बहुत मोहब्बत और प्यार करने वाला है, और मेरा दिल कर रहा था कि शायद मैं अभी मर जाऊंगी और इसके साथ मैं चली जाऊंगी। और लेकिन क्योंकि मैंने अपने दादा दादी को, नाना नानी को अभी तक अलविदा नहीं कहा, और मेरी ये सारी चीज़ें जो हैं मैं महसूस कर रही थी उस फरिश्ते को देख के, जिसने एक रोमी सिपाही का या रोमी अफसर का जो है ना लिबास पहना हुआ था, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि ये मिकाईल फरिश्ता है। जी, यस। So
I knew that this was the warrior angel, that this was no normal angel. This is an archangel. And he was in my room. He didn't say anything to me. He just smiled at me. He just kept smiling at me. And I oddly enough, I felt, this huge sense of, respect for him. I know I feared him, but I also respected him. I also loved him instantaneously. And he was just smiling at me. Just, the way if you saw a baby and, you'd go cooing over it. And he never said a word. He just stood there looking at me. He wasn't glaring at me because I knew the difference between glaring and looking. And he was looking at me with love in his eyes. Unlike the demons who were looking at me, glaring at me, staring at me with hatred in their eyes, this being was looking at me with love in his eyes. और ये जो फरिश्ता मुझे नज़र आया और ये मुझे जब मेरी तरफ इसने देखा तो मुझे वो उसकी आंखों में बहुत प्यार मोहब्बत और शफ़क़त नज़र आई। इसके मुखालिफ जब मैं बदरूहों को देखती थी तो मुझे लगता था कि ये मुझे नफ़रत करती हैं और ये किसी भी वक्त मुझे फाड़ खाएंगी। लेकिन ये जब फरिश्ता मिकाईल फरिश्ता मुझे नज़र आया तो मुझे लगा कि इसकी हशमत और इसकी बुजुर्गी जो है वो मेरे दिल में मुझे सुकून दे रही थी और मुझे लगता था कि ये जंगजू फरिश्ता है और ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसकी आंखों में मुझे मोहब्बत नज़र आ रही थी, प्यार नज़र आ रहा था। And all I know is I kept looking at him and I felt I couldn't keep my eyes off him, but I fell asleep, which I don't do in the afternoon. I fell asleep looking at him, and I woke up and I felt nothing but safety for the first time in my life. I felt assurance. I felt, a kind of comfort. I knew panic would come, but still, I felt comfort knowing that he came to see me, to check on me, to say nothing but to show love. And love is an action. It's not the words you say, right? So I felt loved and I felt comfort. I felt security for the first time in my life. जब मैं उस फरिश्ते की तरफ देख रही थी उसकी आंखों में देख रही थी तो मुझे प्यार और मोहब्बत और बहुत आराम फील महसूस हुआ और उसको देखते देखते मेरी आंख Yeah. And sleep and didn't for the next 3 years because I was about 8 years old then. And then within the next 2 years, I have another dream / vision. And for some reason, on this one night, it was evening. It was about 6:30, 7 p.m. in Saudi Arabia, and we're not early sleepers in Saudi. We stay up all night. But on this evening, for some reason, I felt unusually tired. I was sitting with my family in the family room, and we were watching TV. We were laughing. We were having a good time, and out of nowhere, I feel this huge urge to fall asleep. So I make my way out and I go past the corridors. I make it to the bathroom, brush my teeth, do whatever I need to do, and then head to my bedroom to go to sleep. 2 साल के बाद तकरीबन जब ये फरिश्ता नज़र आया उसके तकरीबन 2 साल के बाद मैं अपने घर में थी तो 7 बजे हम सऊदी अरेबिया में हम लोग बहुत जल्दी नहीं सोते हैं, हम रात को देर से सोते हैं। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं जल्दी से जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाऊं और सो जाऊं और ये अभी तकरीबन शाम 7 बजे का टाइम था तो मैं अपने कॉरिडोर से गुजरती हुई अपने कमरे की तरफ सोने के लिए गई। Yeah, so
my family are all like bewildered. They're looking at me like I'm like there's something wrong with me. And I said, "Where are you going?" And I said, "I have to go to sleep. I have to. I don't know what's happening, but I have to go to sleep." And they were all like asking me, "Are you okay? Is everything fine? I mean, what's happening?" I said, "I don't know, but I really have to go to sleep." So I go past them. Like I said, I make my way to my bedroom. And as soon as my head touches the pillow, I'm out. And I find myself in another place. I'm not kidding. I touched my head on the pillow. I was out like a light. There was no in between. And I was in this place. It was strange. It was a very strange place. It was not my home. It was not my bed. It was a semi-dark place, I would say. Not very dark and not light. Okay. It's not a place I would voluntarily go. And I'm laying on the ground. I think you should do that. You should. जब मैं उस दिन अपने फैमिली के मेंबरों के पास से गुजरती हुई अपने कमरे में जा रही थी, तो सब लोग मेरे बहन भाई पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, किधर जा रही हो? तो मैंने कहा मैंने सोना है, मुझे नींद आती है। तो वो सब लोग हैरान थे कि ये इस वक्त कैसे सोने जा रही है। जब मैं अपने कमरे में गई, अभी मैंने अपना बिस्तर पे अपना सर रखा ही है, अपने तकिए से मेरा सर टच किया तो मुझे एकदम नींद आ गई और मैंने महसूस किया कि मैं एक मुख्तलिफ जगह पे हूँ, एक दूसरी जगह पे हूँ, जहाँ पे ना तो अंधेरा, बहुत अंधेरा है, ना बहुत रात है और बहुत दिन है, बल्कि जैसे कोई शाम का मंज़र है। और वो ऐसी जगह है जहाँ पे मैं जाना नहीं चाहती। Right. So, in this semi-dark place, I'm just laying down. I'm not trying to get up. I'm not trying to do anything really. I'm just awake. And I'm aware of my surroundings, but I don't want to do anything. And in the distance, far off distance, I can see this tiny little light, and it's drawing closer and closer, and it's scanning the floor like it's looking for something, and it's coming towards me, and it's getting bigger and bigger and bigger and bigger and bigger. And I think you should translate that. Okay, so as I was, I fall asleep, I saw this. Oh, sorry, I'm speaking English. Okay, मैंने देखा जैसे मैं जैसे मैं सोई हूँ, मैंने बिस्तर पे सर रखा, मुझे गहरी नींद आ गई और वो जगह जो थी जैसे ना दिन है और ना रात का एक मंजर है। मैं बिस्तर मैंने अपने आप को देखा कि मैं महसूस किया कि मैं एक जो फर्श है उस पर लेटी हुई हूँ और एक एक रोशनी जो है वो छोटी सी रोशनी मुझे नज़र आई है और वो मेरे करीब आती जा रही है और बड़ी से बड़ी होती चली जा रही है। यस प्लीज। Right. So this light, like I said, is drawing closer and closer and closer to me, and it's getting brighter and brighter and brighter. And before long, this light, it transforms. I'm gonna have to get up. It transforms into, not transforms, it suddenly becomes clear to my eyes what I'm looking at. It's a man, a beautiful man, and he's dressed in a white robe, and he's got a gold sash going across his chest, and it's tied to his waist, and one of it on the one side, it's it's a sash, basically. It's tied up, it's gold, it's made of gold, and he's wearing white. जब मैंने उस लाइट को जो रोशनी जो थी मेरे करीब बड़ी होती चली गई और मेरे करीब आई, तो अचानक मैंने देखा कि वो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि वो एक
आदमी है जिसने बहुत सफ़ेद किस्म के कपड़े पहने हुए हैं और उसकी कमर के गिर्द सोने का एक पटका है जो उसके कमर के गिर्द बांधा हुआ है. Oh, I'm sorry. I'm giving you two long sentences. You're right. I'll make it shorter. So, this man who's standing in front of me, he's got white hair to his shoulders. His face is shining like the sun. His hands, his feet are shining. His clothes are white and they're glowing. मैंने जब उस आदमी पर नज़र की तो मुझे पता चला कि उसकी जो पोशाक है वो चमक रही है और उसके बाल जो हैं सफ़ेद हैं और उसके उसके कंधों तक आ रहे हैं और मैंने देखा उसके हाथ और पाँव हैं वो चमकीले और बहुत ही खूबसूरत और चमकदार हैं और उनमें से जैसे कि नूर जो है वो बरस रहा है. Yeah. His face is like the sun, but it's not hurting my eyes to look up at him. And he उसका reaches चेहरा down. जो था सॉरी उसका चेहरा जो है इतना नूरानी है जैसे सूरज जो है लेकिन वो मेरी आंखों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचा रहा. So he stands right in front of me, and then he reaches down like he's reaching for a baby, and he picks me up. And I realize that I am dressed very, very nicely. I'm wearing my favorite shoes, well, something like my favorite shoes, a beautiful dress, nice and white, and I have my hair done. I'm dressed for the occasion. मैंने जब देखा तो वो उस शख्स ने मुझे बड़े प्यार से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मुझे उठाया और मैंने देख रही हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत किसी फंक्शन पे जाने के लिए मैं बड़े खूबसूरत तरीके से तैयार हूँ. मेरे कपड़े, मेरे बाल, मेरे जूती, हर चीज़ नई है और ख़ूबसूरत है जैसे कि मैं किसी ख़ास मौका के लिए तैयार हुई हूँ. Yeah, so he picks me up like you pick up a baby, and then he puts me down, and I can't stop looking at him. He's so beautiful and so loving and so wonderful. Just awesome. I know I'm with God. I know this is my God, and I'm a child. I'm no more than, 8, 9, 10 years old, and I know this is my God. और जब ये सारा तजर्बा मेरे साथ हुआ तो मैंने देखा मुझे महसूस हुआ कि यही मेरा खुदा है क्योंकि इतना प्यार और इतनी मोहब्बत और इतनी शफ़क़त मैं और कभी महसूस नहीं कर सकती थी. उस वक्त मेरी उम्र कोई तकरीबन 10 साल थी और उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मुझे उठाया और मैं उसका जो मेरी एहसास है उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती लेकिन मुझे महसूस हुआ कि ये सच्चा खुदा है जिसकी कि मुझे तलब है. And while this man, this wonderful, wonderful man who is now God is, speaking to me, I feel like his voice is something else entirely. I've never heard a voice like that before. His voice it's soothing. It's not like a human voice. It's wonderful. It's awesome. He's talking to me with love. It's as if love और has a voice. ये आदमी जो मुझ पर ज़ाहिर हुआ मुझे उसकी आवाज़ में इतना सुकून और इतना इत्मीनान मिला जो कि मैंने अपने 10 साला ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया और इतना प्यार था उसमें कि हमारी समझ से और हमारे लफ्ज़ों में उसको बयान नहीं किया जा सकता. And I'm instantaneously madly in love with him. I know that this God deserves my love. This God, this is God, the only God, the one true God. And he is to be loved because he is the source of love. ये जो
आदमी मुझ पर ज़ाहिर हुआ ये प्यार से भरा हुआ था, बल्कि प्यार ही था उसकी बातों में, और उस पे यकीन करने को दिल करता था। और वो मुझे लगता था कि ये प्यार जो इसकी बातों में और जो मुझे महसूस हुआ वो कहीं और से नहीं मिल सकता। यही सच्चा खुदा है। And he's holding my hand. He's holding my right hand. And he's walking with me and talking with me, and we're joking midway. And he's also teaching me the Bible. I've never been able to read the Bible because my father, when I was a child, he took away my only Bible. I had a tiny one. But this, my God, my wonderful God, is teaching me the Bible as I'm walking with him. जब मैं इस आदमी के साथ चलना शुरू हुई, उसने मेरा हाथ पकड़ा। छोटी बच्ची थी 10 साल की, तो वो मेरा हाथ पकड़कर चलाना शुरू हुआ, और वो मेरे साथ बातें करता था, और उसने मुझे बाइबल सिखाना शुरू कर दी। अगरचे मेरे पास एक छोटी सी बाइबल थी जो मेरे बाप ने मुझसे ले ली, और अब मेरे पास कोई बाइबल नहीं थी, लेकिन इस शख्स ने मुझे बाइबल सिखाना शुरू कर दी। You have to understand the reason why I know he taught me the Bible is because even when I had not read the Bible, I knew the stories. I knew the stories he was telling me. How is that possible? हाँ, अब ये आप देखेंगे, सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिसने ना बाइबल पढ़ी नहीं है, लेकिन बाइबल की सारी स्टोरियाँ उसको पता हों। तो मैंने बाइबल पढ़ी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास जो थी वो मेरे बाप ने मुझसे ले ली, और लेकिन मुझे बाइबल की सारी स्टोरियाँ जो हैं इस शख्स ने सिखा दी चलते-चलते, और मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ बातें की उसने। Yeah, because they would be playing in my head like they were a movie. If I picked up a Bible now, I would see it as if it was playing in real life. It's not just a story. It's not just a book that I'm reading. It comes to life. अब जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मुझे मेरे दिमाग में एक जो फ़िल्म की तरह वो चलना शुरू हो जाती हैं, और मुझे वो बिल्कुल हकीकत बनकर ये बाइबल की जो बातें हैं और बाइबल की जो कहानियाँ और वो वाक़यात हैं, वो एक फ़िल्म की तरह मेरी आँखों के सामने चलना शुरू हो जाते हैं। And while we're walking straight somewhere else. But my attention, because I'm a curious child as well, my attention gravitates towards this mound. It looks like an anthill on the distance to my left. And we're walking in a different trajectory. We're walking in a different direction. But then I look at it and I stop, and I'm still holding his right hand. He's holding my right hand. He's holding my right hand, and I'm looking to the left because this thing is on the left of me, and we're supposed to be walking past it. उसने मेरा दायां हाथ पकड़ा हुआ था, और मैंने अपने बाईं तरफ देखा तो मुझे कोई चीज नजर आई। Yeah, and I stop. I keep stopping. We keep walking, and I keep stopping to look back. I keep stopping to look back. We walk, and I kept looking back at this thing. I just had to see what it was. I could not walk away. So I let go of his hand, and I know he doesn't want me to go there. But then I go and I walk towards this mound. It looks like a hole, a 1 meter wide hole. Okay? Can you hear me? Yeah, I can hear you. So जब मैंने देखा तो वो चीज़ जो नज़र आ रही थी, मैं पीछे उस शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। जब मैं चलते चलते उस चीज़ की तरफ देखा, पीछे मुड़कर, तो उसको देख रही थी, और वो शख्स चाह रहा था कि मैं उधर ना जाऊं, लेकिन मैं उधर जाकर देखना चाहती थी। वो एक मीटर चौड़ा जो था, वो एक सुराख था जो मुझे नज़र आ रहा था, और जिसको मैं देखना चाहती थी। You know how children are. We're stubborn. We never do what we're meant to do. And I decide to go to this mountain. Now I'm trying to get to it, but it's too dark for me to see because I'm
walking in his light. When he picked me up, his light fell on me, and I was with him in his light. And the minute I walked away from him, it was like somebody turned off the light. So I'd wait for him to come closer to me. And every time I went closer to this hole, the darkness would envelop me, and I would wait for him to come from me. And I didn't stay too far behind. Like I didn't stay too far away from him, and he didn't stay too far behind. I didn't stay too far away from him, and he didn't stay too. समथिंग इज डबल वॉइस आ रही. Yeah, sorry. I'm going to repeat myself, okay? So No, I voice is doubling. So walked voice. away. Yeah, no, I heard that. So I walked away from him, right? Towards this hole, but I kept looking back at him so that he could come closer. He wasn't too far behind away from me, and I wasn't too far away from him. जब मैं उसके शख्स के साथ मेरा हाथ पकड़कर वो चला रहा था, तो मैं उस जो सुराख है जो कि 1 मीटर चौड़ा था, उसको मैं देखने के लिए पीछे मुड़ी और उस सुराख की तरफ गई, जबकि वो शख्स चाह रहा था कि मैं उधर ना जाऊं. और मैं जैसे जैसे मैं सुराख के पास जाती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि कोई तारीकी जो है, अंधेरा जो है, वो मुझे घेर लेगा. और वो शख्स जो है वो मेरे नज़दीक, मैं उसके नज़दीक भी रहना चाहती थी, लेकिन जैसे कि आपको पता है, बच्चे जो होते हैं उनके अंदर एक तजस्सुस होता है, इसलिए मैं उस सुराख को देखना चाहती थी, उसके अंदर देखना चाहती थी. लेकिन वो शख्स जो है वो नहीं चाहता था कि मैं उसके पास जाऊं. और जैसे ही मैं उस शख्स से दूर जाती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि कोई अंधेरा और उसी तरह का डर और खौफ वो मुझे घेर लेगा. Right. So as soon as I don't think he wanted me to go to this hole, because he kept stopping, right? So I kept beckoning for him to come closer, and he would come closer, and his light would reach me, and then I would walk just a little bit, just far enough for him to come closer, and I'd beckon for him again. Then I got to the hole, and I sat there right at the opening of the hole. और फिर एक टाइम आता है, एक वक्त आया कि मैं ना जाके, मैं उससे ज़्यादा, उस शख्स से ज़्यादा दूर भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं उस सुराख के अंदर भी देखना चाहती थी. और फिर ऐसा वक्त आया, एक वक्त आया कि मैंने वो सुराख जो है उसके पास आकर बैठ गई. And at this hole, I could hear this weird humming sound. I got to the hole, I sat there, and I needed him to come closer to me because I couldn't see. Remember, this place is darkness. And I needed him to get closer, and as soon as he came closer, his light fell on me again, and I was okay with that. I was happy with that. But now I had to look into the hole. जैसे जैसे वो शख्स मेरे पास आता था, तो मेरे अंदर एक रोशनी मुझे घेर लेती थी. लेकिन क्योंकि मैं उस सुराख के अंदर देखना चाहती थी, और इस तरह वो जैसे मैं सुराख के नज़दीक आती थी, तो वो रोशनी जो है वो मेरे से दूर हो जाती थी. So as soon as I sat at the mound, I kept looking into the darkness, and the darkness that I was in was nothing. I mean, the darkness in the hole was nothing in comparison. I mean, there's nothing to compare to the darkness in that hole. I'll be honest with you. It's the worst type of darkness. All of a sudden, I could see something in there, but I couldn't make out what it was. It's dark, darker than dark, darker than the place we were in. जो मैंने देखा, जब मैंने उस सुराख के अंदर देखा, तो मुझे पता चला कि वो एक इंतहाई शदीद किस्म का उसके अंदर अंधेरा है, और वहाँ पे बहुत अजीब अजीब चीज़ें मुझे नज़र आईं. और मैंने देखा कि बहुत ही खौफनाक किस्म का अंधेरा वहाँ पे देखा उस सुराख के अंदर. So I keep squinting my eyes to see. I know there's something moving in there, and I know that I need some light to see what's in there. So I look at my Lord, and I need him to come closer.
And as soon as his light is fully on me, I move just a little bit to allow the light to go in. And once the light goes into this darkest of darkest places, remember it's darker than the place we're in, darker than the place I'm in. And this place is inside that hole. His light goes into this hole, and it's almost like there are a billion mirrors inside this hole. And there's suddenly this explosion of light that's blinding.